pages in actual. Okay. दे दलो पेन ड्राइव देते In that side, just here. ठीक है तो so friends, yesterday we started by saying online so subuchi samto. Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So yesterday we started by saying that the state of an economy of any country, whether it is India or the US or any country, is dependent on 4 factors. Okay. I have added one more factor, which is human development. So just write down first, what is the type of economic system? What the economy depend koruchi. What is the kind of what is the type of economic system in which we are operating? There are supposing you are a Russian, or you are a Chinese, or you are a Cuban. So whether you like it or not, you are in a socialist economy. If you are in the US, whether you like it or not, it is a capitalist country you live in. So it is not your choice. But till we change it, system to change na kariche, so we are part of a system. But jo system women were not allowed to give votes. So there was a suffragette movement. So women were not given right to vote, they were not able to vote. So if you remain in the system, say sati system was there. So till such time, so you are a slave of a system. Are you getting my point? Tome say system ro, you are a product of the system. Apart from the economic system, there is a certain ideology. Please note down. There is a certain ideology. Pratek system ro, what ideology roichi. There are capitalism, idealism kon hala, wealth maximization. Tar ideology kon hala? Communism ro ideology kon hala? Equity, socio-economic justice. Mixed economy ro concept kon hala? Welfare. So this was the ideology. So therefore, whenever we are trying to study any economy, there India, China se compare kalo, ki kali ame America se compare kale. So we have to look at the system, and we will ame dhire dhire jiba. Tome ଟିକେ पूरा बुझिनो जेपन न बुझो पूरा ना ame आपको जाई खाली भड़बड़ करी ताको सार दबार किछि मीनिंग नाही बुझो तो मु प्रति सप्ताह 3टा क्लास नेबी धीरे धीरे नेबी तो जो पन न बुझी पड़छ पूरा न बुझछ you please ask questions. You ask questions. आमे प्रति क्लास रे गोटे टेबल को इंटरप्रेट करिबा 10 मिनिट पे तुम सब लेखो कोन तो बुझो तो एमते हेकि आमे कोन होबा ना इन नेक्स्ट 3-4 क्लासेस रे तमरो बहुत परफेक्शन आस जीवो समस्त एकदम गोटे परफेक्ट हे जीवो so first ला इकोनॉमिक सिस्टम एंड आइडियोलॉजी खाली आउट जोडली आइडियोलॉजी इज इट क्लियर जे तमरो कोन आइडियोलॉजी ता अछि जेमते आमे वर्तमान इंडिया रे गोटे आइडियोलॉजी अछि जे कैपिटलिज्म आमे केमिति हाउ टू प्रमोट कैपिटलिज्म माने शिल्पपति को आमे केमिति प्रमोट करिबा we are not promoting farmers, so that is how farmers are on strike. The industrial workers are not strike. Are you getting my point? Who are on strike? It is the agricultural farmers. They are on strike because the system, the ideology is not pro-farmer. मु जतले चरण सिंह तले हमर फाइनेंस मिनिस्टर थिले तांकर काम करछि he was completely pro-farmer. When he was finance minister, so सेतेबेले गोटे बोट क्लब रे गोटे फार्मर एजुकेशन हेतला प्राय 10 लाख लोक आस्थिले 10 lakh people came and each of them gave about 100 rupees ke 10 टंका के देखरी he collected some 10 crores out of that meeting. So are you getting my point? So सेतेबेले माने the ideology was how to promote the farmers interest. मोर मन अछि डॉक्टर मनमोहन सिंह सेक्रेटरी थांती मु तमळे गोटे यंग ऑफिसर थाए
So when I went into his room, so Manmohan Singh was supposed to go to IMF to attend a meeting. So he showed him the intent Korea. He said, "कले आपने farmer के लिए क्या किए? मैंने ये जो जा रहे हैं वाशिंगटन में farmer के लिए क्या मांग रहे हैं? मोरे भी बोले चाहिए हिंदी रे कले सर ये कि नहीं उसको थोड़ा बढ़ाइए, इसको बढ़ाइए, ये allocation को बढ़ाइए." Are you getting my point? So ideology of a leader is also extremely important. तमें जितने जहाँ पाठ्यक्रम करो जहाँ करो, यदि leader रा ideology is extremely important. यदि आज ही राहुल गांधी आसिला, so से मैंने आहुरी distributive justice करे को बच्चे, से मैंने गोटे union जो minimum, मैंने I am not looking at the right and wrong part of it. I mean गोटे universal basic income बोल लिखाओ, universal basic income. This is a scheme that that he is talking of. So it's called the UBI scheme. It's called the UBI scheme. Please note down. It अनेक समय question ऐसी हो तो prelim रे UBI scheme. UBI है ना Universal Basic Income Scheme. Universal Basic Income Scheme रे everybody will get at least 3,000 rupees per month. That is the ideology of Congress Party. That's the ideology of the Congress Party. जिम आजिकल तमें लड़की बहन जो होची जो महाराष्ट्र है ना 1500 टका दउचंती कि झारखंड रे 1000 टका दउचंती कि सुभद्रा योजना रे 5000 टका देबे वर्ष को देबे. That's the ideology. जे हमें एटा प्रमोट करिवा माने वुमेन वोट को वुमेन वेलफेयर को प्रमोट करिवा. एटा वुमेन वेलफेयर पे होची काहे कि होची. What a very interesting. Can somebody tell me why they are targeting women now? It has been seen. Please note down. In 1980, only 40% of the women were giving vote. In 1980, in 2024, the number has increased to 66%. मैंने आज ही जो देश रे 65% भोट दउचंती सेतरे पुओ तो कम दउचंती झियो बेस दउचंती. Are you all getting? स्त्री लोक माने आगु 40% थला 80 रे वर्तमान now it is 66%. So they are a very dominant force. आ तो काहे कि दउचंती कैश ट्रांसफर काहे करचंती से देखुचंती मिडल मैन को देबे दर सरपंच को देबे कि हमको देबे सब पैसा खाइबो तेणु ताको डायरेक्टली ट्रांसफर कले. So there is no middleman. So that is why women are voting for the BJP. Are you all getting me? Women are the kodono. Seven dekhuchandi seba au ki middleman nahi, and they are going to vote. So gone are those days जे तू परे vote देबू next थर देबू सेमते नाही. माने हमर तले election होची हमर होची my wife is ready before me. मिस से तुम जीवो की जीबिनी माने की कथा कहउछ. But there was a time when we got married, she was very reluctant to go. I कौन जाकर करेंगे? Are you getting my point? In 83 when we got married, she was very reluctant to go with me forever. किंतु एबे एकदम पूरा dress press है कि से पूरा एकदम ready. So there is a change. Are you all getting me? So women power. So people माने जो ideology. माने एवढा खाली तमे भाबनी जे गोटा होची खाली खाली प्रीव्यूज होची ना, nothing like that. अरे गरीब लोक कहउचंदी सब धनी लोक तो बहुत पैसा पत्र कहउचे हम कहू तो किछि पैसा आसिला आमे सब प्रोफेसर कहउचु खाली टंका बांटुचंती से ने कहबे टंका बांटी ने कोन करबा एवन का सारा एते पैसा अछि किछि टंका हमु दियंतु. आरे करिमे पॉइंट. सो प्लीज नोट डाउन दैट द सोसाइटी तमे द ओएस ऑप्शन ऑफ के हम कहबो. प्लीज नोट डाउन द सोसाइटी इंडियन सोसाइटी इज मूविंग फ्रॉम अ प्योरली pro-capitalist system to a pro-common man's approach. Pro-capitalist approach to pro-common man approach. Se common man re common man and women asu. Agu khali puruष कथा कहउतले. बुझि परछ मान? There is a silent revolution. आमे जो माने सब अच्छे मास्टर अच्छु आमे कहउची कोन इन सरकार वेस्ट करची खाली पैसा दउची एजुकेशन के खर्च एटा बाजे कथा सब. You talk to poor people, you talk to them, they'll say that this is a government that cares for us.
आमे गंडे खाया को पाउछु टंकाए चावल पाउछु 30 किलो चावल पाउछु खाली तमे जो माने न खाई के तुम खाया को भल लागुनी ना नहीं मु खाइबेनी सागो खाइबेनी पोटल खाइबेनी आज काई कलु अंडा कलु काई चिकन कलुनी आर यू ऑल गेटिंग मी तमे गोटे पोटल खाइलो अरे इसकी बस कौन सबुदिन भेंडी चलती अरे से लोकर सब भात खाया को नहीं आर यू ऑल गेटिंग मी spare a thought for those people who constitute 70 to 80% of your Indian population. 90, please note down, 90% of Indians get less than 20,000 rupees per month. Kali कहतली. Do you understand that? माने 20,000 रे कौन हबो मते कहला यदि स्वामी स्त्री पिलाटे हे गला स्कूटरटे हे गला केमते बाजा बजे मते कहला भाव तुम्हें बुझ तो आम कहे पॉवर्टी लाइन 44 टका तो 44 टका देखी 10 दिन 440 टका दियो तो माने हालत खराब हो कोटी नहीं सो आम जे पर्यंत आम एटा सो आइडियोलॉजी इज वेरी इंपोर्टेंट व्हाट आइडियोलॉजी वी हैव ए जो कार्ल मार्क्स एते कथा कहला वर्कर्स मन कहला काहे कहला बिकॉज़ ही सॉ हाउ वर्कर्स वर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड 14 घंटा काम करथले छुआ मन काम करथले pregnant women were working he saw exploitation are you all getting me kahe ke marx ko bhagwan boli bhavanti because he cared for people who are getting exploited so system apart we are also talking of ideology are you all getting me क्वेश्चन से पचाला धर इन्फ्लेशन हला बायगण दाम 10 टका रु 40 टका हला अनिल अंबानी को कौन असुविधा अछि मते कहिलो कि मते कौन असुविधा अछि कहिलो मु किनिबी कि जो गरीब लोकटे जीवन बायगण किनिया पे आलू दाम बढ़िला अरे गटे so inflation doesn't affect everybody so that is why when inflation happens poor people are affected the most governments have changed in Delhi when onion prices increased very sharply Congress was booted out of power ओनियन पाई किंतु की तो बूट कले नहीं तमे रिच लोक उड़ाक बूट कले पुअर पीपल व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इन्फ्लेशन अफेक्ट्स द पुअर द लोअर मिडिल क्लास द मोस्ट जो हाउस वाइफ जाउची मार्केट को जाउची देखो जले बीन दाम ता 120 टका होउची सी को चारे इतने दाम केमते हे गला सेकंड परसेंटेज छी ओ से बैंक इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिता मचेंदर सेटा बुझियो बढ़िया कथा वेरी गुड हमें गोटे बहुत बढ़िया तुम सब कोन काम करो बहुत बढ़िया सिद्धि पर तो कोन कहूची से हिंदू रे एटा बाहर छी मु आज भाबुत से कथा कहया पे तो जा adding base effect would also provide some relief. However, core inflation will exclude food and आमे जेतले इन्फ्लेशन ता एनालाइज करबा इन्फ्लेशन रे कहितल तुमको इन्फ्लेशन ने कहितल तुमको वेरी गुड एमती टिके पढ़ी के आसीबो आमे तले इन्फ्लेशन कहूचे इन्फ्लेशन रे गोटे हला कोर इन्फ्लेशन आ गोटे our normal inflation. What is the difference between the two? Core inflation, normal inflation rate difference ta कौन? तो कर रहे? पता? Normal inflation rate India रे पता नहीं ची बराबर 6%. Core inflation है ची 4%. Please note down. Food inflation hochi around 10%. Please note down these three figures. Program, please note down these three figures. When you are talking of inflation, please note down normal inflation is equal to core inflation plus food inflation. Please note down core inflation plus food inflation. Core of food तक मिसे दले
hala normal inflation. Food inflation sangare, please write down energy also. Food inflation re ame energy noche. Why we are making a difference? Now we have no control over food inflation or energy inflation. Petrol dam kon habo, kerosene dam kon habo, ama hatre kichhi nahi. Are you getting my point? So these are all decided because 80% of our petrol is we are importing them. Our India only 20% we have. 20% our Nigeria own production, 80% we are importing. So, are you all getting me? So food inflation, how energy prices, petrol prices, inflation, we have very little control over them. The government has very little control over them. Say to come exogenous. Please note down. It is called the exogenous. Exogenous money beyond our capacity. जो गुड़ाक सरकार को हाथ में अच्छी सरकार जिते चाहिए धर पियाज मिलूनी ताले पियाज रेट बढ़िबो ओडिसा रे धर आलू ममता बनर्जी बंद कर देला पठेबा ताले आलू प्राइसेस बढ़िबो. Hello sir. You cannot blame माझी जे आलू दाम ता कहीं बढ़ुची से चेष्टा करियो अन्य स्टेट आनिया पे but it is not within his control. Are you getting my point? Sir. Have you understood what is exogenous? Exogenous is beyond your control. So food inflation, energy inflation is beyond your control. Sir. तार वेटेज हला तुम प्लीज नोट डाउन करो तार वेटेज हला इन फुल इन्फ्लेशन होची 50%. Normal inflation minus food inflation is core inflation. बुझी पारलो रोजेलिन? Normal inflation consists of two things. What are they? One is core inflation, the other is food inflation. Food inflation will also include energy inflation. Food or energy weightage in the total inflation is around 50%. So, are you all getting me? So, when we are looking at inflation, जेतले हमें इन्फ्लेशन कथा कहूचे सेतले हमें पचारिबा जे इन्फ्लेशन टा कोर इन्फ्लेशन की फूड इन्फ्लेशन की ओवरऑल इन्फ्लेशन. So what she is trying to say, amar jo repo rate decide habo, monetary policy committee will decide in end of December. Same thing. So they were so kahe kim deji na because they are finding that food inflation is quite high. It continues to be about 9 to 10%. Are you getting my point? Inflation रे कितना part हला? हाँ कौन कौन हला? सर आज गोटे न्यूज़पेपर आर्टिकल जो हॉट पोटैटोस ऊपर थिला गोटे सेटा टिके सर कहि देबे क्लास बुझी पनी कोन कहू सर हॉट पोटैटोस ऊपर जो आर्टिकल अछि कार ए ओडिसा रे जो माने पोटैटो रेट इन्फ्लेशन सेटा ऊपर टिके सर जो बाहर चे आर्टिकल ता विषय के कहि देबे सर. अच्छा so one is exogenous factor, please note down, the other is called the endogenous factor. So when we are trying to examine how the government is doing, the first thing we have to find out is whether it is a endogenous factor or it is an exogenous factor. There are crude oil ro dam oil country जोठे हमें आणुचे आजी $90 to $100 हला. So if the prices of your petrol goes up, you cannot blame Narendra Modi or Nirmala Sitharaman for that because it is an exogenous factor. Is it clear? Is it clear? But if it is something which is where they have control, but they are not doing it, then you will blame the government. तमे एटा करि परथन कि तमे कलो
Are you all getting me? So similarly in inflation, so जदि हमें देखियो जे इन्फ्लेशन टा केते अछि 6% अछि ताले से रेपो रेट टा कमे दियंते किंतु they are looking at food inflation because it is affecting the poor people. Are you getting my point? बुझी पछो नै? Are you only looking at normal inflation or are you looking at food inflation which is affecting poor people? So if it is affecting poor people and the rate is very high, the government should be very careful about it. Are you all getting me? Eita hochi tomorrow eithre ideology asibo. If you are a, please note down, if you are a pure capitalist society, if you are a pure capitalist society, you will say that let the market forces decide. If the market forces supply is less than demand, then the price should be high. So हमें तो ideology कथा नौचे बुझले कि अगर ना हमें ideology कथा नौचे गोटे हला capitalism हला गोटे हला socialism आउ गोटे हला please note down liberalism. ये जो liberalism कथा आछी third part आछी बुझले तो in capitalism जोटा एडम स्मिथ कहूतला बुझले तो सेटा गोटे पूरा फ्री मार्केट पर आसला. So government has no accountability there. If tomorrow the dollar is 90 rupees and not 86, तो मतलब बाहर को जाओ तो तुमको अधिक पैसा दो पड़ला. So government is not bothered. जे तुम 90 टका काली अछि आसंता काली 82 हबो. So government said, so it is a market fluctuation. Are you getting my point? So this is the spirit of free market. Are you getting my point? This spirit, please note down, this spirit, this was the philosophy till 1930. Please note down. Till 1930, till Keynes wrote his general theory, this was the philosophy. Tara opposite hela socialism, Jothre, Soviet economy, they said, no, we have to care for prices. So please note down, so prices were controlled there. Please note down. Russia, there will be long lines for bread, long lines for milk. Ajibi, जदियो से माने market economy ही चलती, तब एबे भी तमें देखो लंबा क्यों. And all necessary goods are available at very reasonable rate. Ajibi. Are you all following me? Do you understand the contrast? America रे सेही थी गरीब लोकोड़ा को खाया को मिलनी. किंतु रशिया रे मस्को रे तमें जीवो लोकमान को बड़ा assured rate रे मिलुची. हमारा जो public distribution system, जो था हमें बड़ा reasonable rate दो थे. So there the price was not market price. Price was administered price. बुझी पड़ता है? Price, there are two prices. One is market price, which is driven by law of demand and supply. The other is the administered price. That the price which is decided by the government. It is socialism. Liberalism, please note down. Liberalism, duita bhaga hai gala. Please note down. This is very important. Liberalism, one is today called neoliberalism. It is Hayek and Friedman. Online जो मना चिट्ठी लेखो please हाँ. 1945 रो कुछ पढ़चोरा नहीं. Capitalism 1776 रा आरंभ वाला. Capitalism 1930 वर्ष पर्यंत free market कथा रहेगा. तापरे communism वाला के में 1970 मसीहा रू. सेमान कर कहले जे नहीं. Price should be administered. Please note down. This is the most important thing. Price would be administered. Price will not be market determined. Quota price administered of basic goods. Please note down. Not everything. Not perfumes. तो जो lipstick लोगों से सेटा हमारे administered.
एटा दबो पड़े तुम मार्केट प्राइस दबो पड़े तुम जो पेन लिखुचो दैट वुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस यू गो टू मॉस्को पेंसिल पेन इट ऑल एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस फिक्स्ड प्राइस कौन कहला एटा एसेंशियल गुड्स होची कि तुम गोटे निहाती पार्कर पेंट नेबी ताले तुमको जहां रांदे दिया तो बुझी गलो कथा जोड़ा का नॉर्मल लोग खाउ करछथि अरे के अरे छाड़ तक कथा सुनो तुम एको देखो ना से दीपनित केबट इकोनॉमिक्स हला सुनो तो हां को हाँ हाँ ठीक अच्छे हाँ सुनो नहीं ठीक है सो लिबरलिज्म रे दीटा स्ट्रीम लोग प्लीज नोट देयर आर टू स्ट्रीम्स इन लिबरलिज्म गोटे हला न्यू लिबरलिज्म आउ गोटे हला क्लासिकल लिबरलिज्म एट हला स्टिग्लिच So now, as far as ideology is concerned, let me close this particular thing. जे आजी चारिटा आइडियोलॉजी होची गोटे हला प्योर कैपिटलिज्म सेकंड हला सोशलिज्म थर्ड हला न्यू लिबरलिज्म रे कोन होची जे मिनिमल गवर्नमेंट इन न्यू लिबरलिज्म दे बिलीव इन मिनिमम गवर्नेंस वेरी लो टैक्स रेट एंड जो बिजनेस एंटरप्राइज रे किछि इंटरफेरेंस होबनी गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन बिजनेस एंटरप्राइजेस किंतु जो माने क्लासिकल लिबरलिज्म रे विश्वास करचंती पीपल लाइक जोसेफ स्टिग्लिच से माने कहउचंती जे मार्केट मस्ट बी रेगुलेटेड ता नहले दे विल अर्न अनड्यू प्रॉफिट अरे गडी में पॉइंट माने बुझी पड़छो तो दीटा डिफरेंस बुझी पड़छो जिमते आज खोज गोटे क्रॉनिक कैपिटलिज्म गोटे नोट करो क्रॉनिक कैपिटलिज्म ता माने कोन कि वी आर प्रमोटिंग ए फ्यू बिग इंडस्ट्रियलिस्ट्स दैट इज प्योरली न्यू लिबरलिज्म एटा होची यूएस मॉडल प्लीज नोट डाउन एटा होची यूएस मॉडल द यूएस इकोनॉमी बिलीव्स इन न्यू लिबरलिज्म ट्रम्प बिलीव्स इन न्यू लिबरलिज्म semane low tax rate kochunti from the rich people very low tax rate ho koti new liberalism rate please note down very low tax rate on the rich people top people ko tax rate would be very low in classical liberalism tax rate on the rich would be high and economy would be regulated jodi कि बदमाशी करूची कंपटीशन शुड बी देयर बुझी पड़तो तो हैव यू अंडरस्टूड ए चारिटा मॉडल रे आमे जेतेबे आमे कोन सिंस बुझुचे आर्टिकल पढुचे कि जो आर्टिकल पढुचे आमे प्रथमे ताको फिट करे पड़िबो ए आर्टिकल ता को आइडियोलॉजी रे अछि तर अरविंद पानागिरिया प्लीज नोट डाउन अरविंद पानागिरिया जी हमर फाइनेंस कमिटी चेयरमैन अछंती जी हमर फाइनेंस कमिशन रे जे चेयरमैन अछंती ही इज अ हार्डकोर neoliberal economist please note down he is a neoliberal classical economist he believes in free market माने तमर देश रे को टाइप रो इकोनॉमिस्ट अछंती ता ऊपर डिपेंड करची तम इकोनॉमी टा प्रोग्राम बुझो कि नहीं से किछि नो से दीपन्नता किछि नो से होचे किए माने हु इज एट द हेल्म ऑफ द अफेयर ही डिसाइड करूची जेमते आज गोटे आर्टिकल बाहर से पढ़िबो ये चेन्नई रो जे स्टालिन गोटे लिखिची जे फिस्कल ट्रांसफर के पढ़ी के आसबो काली मते कहबो तुम बुझ पाला के कोन बुझलो नै से कहूची जे फिस्कल ट्रांसफर प्लीज नोट डाउन फिस्कल ट्रांसफर जो होची सेथिरे जो माने भलो जो स्टेट माने परफॉर्म करचंती से माने कम पैसा पाउचंती माने सरकार को जो फाइनेंस कमिशन रो काम हला जो सेंट्रल टैक्सेस हला ताकू डिस्ट्रीब्यूट करिवा बुझो तो प्लीज नोट डाउन एति खाली मन रखो जे फाइनेंस कमिशन रो काम हला जे टोटल टैक्स पुल प्लीज नोट डाउन टोटल टैक्स पुल रो टोटल सो इट हैज टू वर्क्स
तुम एटा पढिबो आज एडिटोरियल पढिबो काली हमें से डिस्कशन करबा काली फर्स्ट हमें 10 मिनिट से डिस्कशन करबा हला से जो आर्टिकल रे अछि से लिखुची मेन कथा से कहूची आई डोंट थिंक यू विल अंडरस्टैंड ए जो फाइनेंस कमिशन अछि तार काम हला ए जो सेंट्रल टैक्स जो कलेक्शन होची तार केते परसेंट will go to the states and what would be the basis of giving to states এটা নোট করা ভালো কি समझते রিনা সব নোট করে টাকু फाइनेंस कमिशन रा काम हला हमरो the total taxes that we are collecting central taxes we are collecting like income tax like your GST all this central tax customs duty, all this that we are collecting, what is the percentage which will be retained by the center and what will be the percentage which will be given to the states? So today it is 40%. Ago 32% thala, but 40% achi, around 40%. But most important hala, ye jo 40% rohila, how that 40% would be divided between Odisha, Maharashtra, UP and Tamil Nadu. Basis of devolution. Are you getting the buche katha? Gotte hala tonka kete total pool ru kete tonka bar kar diya. Are you all following this? But the more important thing is which state will receive how much and what is the criteria. ना गोटे छोट कथा कहूँ ताले तुम आर्टिकल पढ़िया तुम सुविधा हम जे जो बांटी जो टंका बांटिबे वन ऑफ द क्राइटेरिया होची पॉपुलेशन वन ऑफ द क्राइटेरिया हला पॉपुलेशन पॉपुलेशन को सपोजिंग 40% वेटेज दिया जाय बुझलो हैव यू अंडरस्टूड पॉपुलेशन हैज अ वेटेज ऑफ 20% नाउ those states where population is growing more, they will get more money. Typically, those states are UP and Bihar, Madhya Pradesh. एवढा करे सबो सेही ठीक कोन होची ना तांकर समान पॉपुलेशन कंट्रोल न कर करी तांकर पॉपुलेशन तो बहुत बढ़ुची. On the other hand, states like Tamil Nadu and Kerala, population growth is much less. So semane कहउचंती जे ए जो 20% population criteria करचो so it is going against us. Have you understood? Yes, sir. तो गोटे जस्ट एग्जांपल दउछ किंतु तमे जे अरविंद पानागरे भले गोटे फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट हबो से कहबो मु कोन करबी अरे गेटिंग माय पॉइंट माने तेलिया मुंडे तेल होनी तेलिया मुंडे ठेंगा. Have you understood the issues? एडिटोरियल पढ़ो से कौन टा कहब चाहूँ बुझल तो तेणु माने बेसिकली से आर्टिकल रे कहूची जे जो माने डेवलप स्टेट जो माने पॉपुलेशन कंट्रोल करचंती जो माने बेसी टैक्स कलेक्ट करचंती प्लीज नोट डाउन टैक्स बेसी कलेक्ट करचंती टू थिंग्स जो माने बेसी पॉपुलेशन कंट्रोल करचंती सेकंड जो माने टैक्स कंट्रोल जो माने बेसी कलेक्शन करचंती से माने लेस एंड लेस पाउचंती माने महाराष्ट्र फॉर इंस्टेंस accounts for 50% of the total revenue. Maharashtra. Bombay alone accounts for 35%. Bharatara, Bombay ru 35% actually. Kintu, they receive only 10% of the total tax. So, semane kohunti ame ete collection korchu sala bearing to apegi. Are you all getting my point? Are you understand? So, therefore, what I'm trying to say, the ideology becomes very important. What is the kind of ideology that you have? Supposing you have somebody like me who is a leftist. से कहबो जे सर जेमिते माने जो माने पॉपुलेशन जे कम कंट्रोल को ताकू बेसी पैसा दियो. I'll change the criteria. Are you all getting me? तेरो एमिते कथा न जे जहां तुम टेक्स्ट बुक रे पढु से अनुसार हबो. It is all a function of your ideology also. In which system are you working on? Is it clear? तापर second कहतिली sectoral composition. Third कहतिली consumption, investment by private expenditure. तापर हला
तापर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड तापर कदी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डू यू रिमेंबर दैट कथा जोड़ो जे ह्यूमन डेवलपमेंट ए कथाटा काली मु छाड़ देती हैला गीतांजलि बुझलो कौन कौन पांचटा हला व्हाट आर द फाइव थिंग्स टेल मी yes factors of production of human development eta hala so now let us go into ideas eta dear our world re there are four contrasting ideas today in the world today eta gote chabi first hala pure socialism jota Karl Marx coach. There are still countries like Cuba which believes in socialism. There are quite a few countries which still believe in socialism. Then you have Keynes. But the reason why I am showing today, so two more economists I am bringing in. Please note down. This fellow's name is Robert Solow. Please note down Robert Solow. Robert Solow is the father of the theory called trickle-down theory. Please note down. Trickle-down theory. এটা को मन रखो এটা অনেক সময় প্রিলিমস রে আসিব trickle-down theory টা কোন what is trickle-down theory are you getting my point trickle-down theory हला तमे जे टैप टा खोलिलो सो पानीटा यूनिफॉर्मली सबडे जीव ना तुम घरे टी बेसी पानी दबो अन्य घरे कम पानी दबो so this is what is called trickle down theory so those who believe in trickle down theory they say that if there is growth say supposing today India re growth hoche 6% if it increases to 7% please note down a 1% benefit will go to all. Please note down, trickle-down theory believes, please note down, trickle-down theory believes that the benefit of growth will be equally shared by all. Benefit of growth will be equally shared by all. एटा तमरो ओएस रे भी प्रीलिम रे आसीबो ट्रिकल डाउन थ्योरी की कहूची बुझु तो ते तीन चारटा ऑप्शन आसीबो सो ऑप्शन हला जे जोथरे एवरीबॉडी गेट्स इक्वली बेनिफिटेड से ओटा स्टेटमेंट मतलब देखो ए राइजिंग टाइड प्लीज नोट ए राइजिंग टाइड विल लिफ्ट ऑल द बोट्स जदि नदी रे जुआर आसीबो ताले सबु डंगा उठिबो ए एग्जांपल से राइजिंग टाइड विल लिफ्ट ऑल द बोट्स हमर सो आईएएस रे क्वेश्चन आसीबो बुझिलो आसीबो राइजिंग टाइड विल लिफ्ट ऑल द बोट्स हु सेड एंड व्हाई बुझि पछो ए भला सब क्वेश्चन आसीबो तमरो मेंस रे ए भला क्वेश्चन आछो ए राइजिंग टाइड विल लिफ्ट ऑल द बोट्स की कहितला रॉबर्ट सोलो ए लोग एटा 1995 से कहतला प्लीज नोट डाउन 1995 now this theory of trickle down theory was the theory which was accepted by everybody said this is a good theory so that is why every country talked about growth and growth only please note down ये जो growth कहूचे जीडीपी भारत 5 पोजीशन रे अछि growth टंका तारा बापा होची ये होची पितामह तारा Solo is the person responsible for this kind of a thing बुझलो आइडियोलॉजी से कहला हमरो किछि दरकार नै तमे खाली ग्रोथ करो समस्त पाइबे समस्त छेनापोड़ खाइबे समस्त कोक पीबे तुम व्यस्त होनी समस्त चिकन खाइबे बहुत सब सुविधा हो एई कथा को प्लीज नोट डाउन एई जो दांत देखौची जोसेफ स्टिग्लिच 2002 रे तको नोबेल प्राइज मिलला प्लीज नोट डाउन 2002 रे तो नोबेल प्राइज मिलला से नोबेल प्राइज जब एक्सेप्ट कले त कहले दीपक टी कहंतु सर अपन किछि से कहले ए कथाटा प्लीज देखो
A fast rising tide followed by a storm will dash weak boats into the shore. Please write down. It's a beautiful sentence. A fast rising tide followed by a storm will dash weak boats onto the shore and smash them into smithereens. Smithereens means khand khand kar debo. So this teacher in Harvard, से तो कहला से अपन जो सोलो सार जो कहचंती जे राइजिंग टाइड विल लिफ्ट ऑल द बोट्स सार भाबुचंती जे सबु बोट उटा समान कहले ता भितरे जदी को बोट रे कोणा थिबो कहारा जदी पटा माने पाट पटा तो वीक हिथिबो वीक बोट से थिबो कि लिकी बोट से थिबो कोन हबो जेतेबे जोर आसीबो तार पानी पसले से कोन हबो से पूरा जागिरी सोर रे गिरी चूर्ण चूर्ण हबो. Are you all getting me? So he said when you have a rising tide there is no guarantee that all the boats will go up. The poor will not go up. Please note down. So that is why he said that the government must interfere. So government has to come in. Government Kamala, the benefit of growth is distributed to all. ये जो होची तमरा जो कॉन्टैक्ट सुभद्रा योजना होची, it is Joseph Stiglitz. बुझी पड़तो कथा? Are you all following me now? एटा को हमें कहूचे classical liberalism. एटा होचे classical liberalism. बुझी पड़तो कथा? एटा neo liberalism नो. Neo liberalism कहूचे तेलिया मुंडरे तेलो. तेलिया मुंडरे तेलो आला neo liberalism. Are you all getting me? ये तो बुझीगल कथा उड़ा को. आइडियोलॉजी कथा बुझीगल कि नहीं कसला बुझेटा. मजा लागुची नहीं कथाटा केते सुंदर कथा से कहितला. तेनो ए जो जोसेफ स्टिग्लिट्ज रे ए कथाटा एबी भी समस्ते एक्सेप्ट करछथि जे कोन कहला सर एग्जांपल होचे से दिस इज व्हाट इज assumption was. This is what his assumption was. जे तरह growth hobo everybody will get employed, so everybody will get a benefit. This was the simplistic assumption he was making. But when there is growth and growth is not even, it is not benefiting everybody. amar jo hela jo Brexit hela, please note down Brexit jo hela, Brexit hela kon pai, please note down anek sabeta question aso main re jo Brexit re jo hela je desh mane England कहला हमें यूरोपियन यूनियन रो बाहर जिबा. अरे बुझी पड़छ ब्रेक्सिट कथा माने पड़छि ब्रेक्स माने ये ब्रिटेन वाज पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन थोड़ा काहे की गले बड़ पागला से माने काहे गले को माने वोट दिलदा विरुद्ध के द पुअर पीपल. प्लीज नोट डाउन द पुअर पीपल, द पुअर, द इलिटरेट जो माने सब ट्रम्प पे सब वोट दैछथि से मानकर कहबा कथा जी व्हाट इज द बेनिफिट टू अस. आमो पिला जो स्कूल को जाउथला से बाजे स्कूल को जाउची, जो हॉस्पिटल जाउथला से हॉस्पिटल जाउची. अरे बुझी पड़छ कि नहीं. See the please note down the biggest problem of democracy today is that those who are poor remain poor in terms of access to quality education, quality healthcare. Please note down this. Have you understood? Those who are poor, amar jo growth story hochi bharato emte nahi je India growth story honi, we are growing, but those who are poor they are not gaining substantially in terms of quality education, quality healthcare, quality nutrition. This is the biggest problem in the society. So unless your ideology, your government is sensitive to this, ताले असमता रहेगो. ସେମାନେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଦଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟ ଆମେ ପଇସା ଦେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ. Are you all getting me? ଗରିବ ଲୋକ କାହିଁକି ଭୋଟ ଦଉଛି, କହୁଛି ହଁ ଠିକ ଅଛି ସେ ଆମକୁ ତ କିଛି ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି, ତମେ ତ କିଛି ପଇସା ଦଉନ, ଆମକୁ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ. Are you all getting me? ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଟ ପାଇବେ. ଯିଏ ଟଙ୍କା ବାଟିଲା ସେମାନେ ସେ ଭୋଟ ତାକୁ ଦେବେ. ବୁଝିପାରୁନ ତ ଆଇଡିଓଲୋଜି ବୁଝିପାରୁଛ? Is it clear to all of you? Clear ହେଲା?
So we go again to now we please note down, we will go to the factors of production. Tell him कौन factors of production है K और L. एटा गुटिके नोट करो, एटा हमें बुझिबा. एटा अनेक समय प्रिलिम्स रे आसीबो, आईएएस प्रिलिम रे आसीबो, ओएस प्रिलिम रे आसीबो. कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन तर ऑन तर मेन मानेटा. Please note down Cobb Douglas production function. Please write down Cobb Douglas production function. Provide a linkage between production and factors of production. Between total production and factors of production. अरे बुझो कि नहीं? जिमिति हमें जीडीपी रे कौन है? GDP is a function of C, I, G and X. So GDP is a function of that. So now the question is that supposing Y is the output. Y is the output. How will be how output would be determined? What is the relationship between output and inputs? Output and input. Eight are factors of production. ठीक है? Output and input. बुझो तो कथा. हमें कहले तो हमें कौन तार exact relationship? एक कथाटा को एक जिनो थिले एरो इंजीनियर थिले. माने इकोनॉमिक्स मध्ये ताको एटा को माने इकोनॉमिक्स रो सबटु मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन बोली कहते. 1947 रे कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन वाज देयर एंड एटा हमर इकोनॉमिक्स रे प्रथम हमें पढू जे हाउ डू यू ब्रिंग आउट अ लिंकेज. तो थोड़ा स्टील प्लांट करछो. सपोजिंग यू हैव अ स्टील प्लांट, यू हैव अ कार फैक्ट्री. हाउ डू यू डिटरमिन the कितने production हो? So he said, please write down. He said, Y is nothing but output. Output is equal to A into K to the power alpha. A K to the power alpha. Y is equal to A into K to the power alpha and L to the power beta. If anybody should have got Nobel Prize for any equation, this is the equation. Even today, this is considered to be the most important equation, and purely from a practical point of view. Now, what are the factors? Please note down. Second, output of any place, output of any country, output of any factory is dependent on three things. Please note down three things. First, what is the scale of production and what is the level of technology. कार फैक्ट्री करूचो 500 कार करूचो कि 5000 करूचो. If you are producing 5,000 cars, your cost of production would be less. Higher the scale of production, lower will be the cost. Is that clear? America ra gaadi guda ko India to कम होतला cost होतला because the numbers are too many. Japan रे जो Hyundai हला सेटा हला because the scale of production बहुत large scale. China is growing so much because of the scale of production. Everything is very, very massive. So, scale of production, second, level of technology. Khali scale, what is the level of technology? So, A is what? Scale of production and level of technology. Then, factor K or L. Did the factor? Now, K to the power alpha
तार अल्फा हला फैक्टर एफिशिएंसी ए जो कैपिटल हला तार फैक्टर एफिशिएंसी केते ऑन ए स्केल ऑफ 1 तमे जदी कैपिटल अछि से कैपिटल रो एफिशिएंसी केते होची हाउ एफिशिएंटली इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड सपोजिंग इट इज 0.5 सो अल्फा जगह केते आसीबो 0.5 एल हला L to the power beta hala efficiency of labor. How skilled is the labor? बुझी पड़तो जदि L टा unskilled hala सेटा हो 0.1 जदि semi skilled hala 2 हबो highly skilled hala 5 की 6 हबो बुझी पड़तो ठीक है बुझी चेष्टा कर. This is a very very important equation. बुझी गला ताले? Have you understood? So what are the three factors? A hela level of technology and scale of production. तापरे capital रो efficiency और labor रो efficiency. Is that clear? So so this is so कितना सुंदर है बुझे लगा ताले हमें if you are looking at production of a country or production of a factory, you have to see what is the scale of production, what is the level of technology, and what is the efficiency of your labor and capital. कितने सुंदर है बुझला ए जिनसटा को प्लीज नोट डाउन जो ये जो अल्फा एंड बीटा तेरो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी प्लीज नोट डाउन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी प्लीज नोट डाउन ऑल ऑफ यू टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी गोटे देश रे हाउ डू वी फाइंड आउट द टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी गोटे देश रे केते इंप्रूवमेंट होउची सपोजिंग आई वांट टू कैलकुलेट ए जिनसटा रॉबर्ट सोलो करथिले Cobb Douglas कौन करते ले? He established the relationship between output and inputs. Is that clear? Clear है ना? Cobb Douglas established a relationship between output and inputs, where he brought in scale of production and level of technology. Solow, who got Nobel Prize in 1987. 14टा नोबेल लॉरेट ता अंडर स्टूडेंट थे इंक्लूडिंग अभिजीत बैनर्जी ही इज द पर्सन लास्ट ईयर मरीगले से सोलो मु लिखतिली गोटे बहुत इमोशनल आर्टिकल ता लिखितली जे से बहुत बढ़िया माने बहुत बहुत भलो माने इकोनॉमिस्ट ताको बहुत सब सम्मान करंती से बाहर करतला गोटे जे से कहले ठीक अछि दिस इज फाइन दिस इक्वेशन इज फाइन बट सपोजिंग आई वांट टू जे मो कंट्री ता केते ग्रो करछि. Now, please remember this y is equal to this thing is concerned with a factory. Please note down. It is of a not of a country. It is of a factory. Production of a factory. Are you getting my point? This equation is not for the economy as a whole. Now, if you are going to look at the economy as a whole, you have to look at what is the increase in K and L plus what is the improvement in alpha and beta. Please note down. गोटे हला रेना बुझी पड़छ गोटे हला तमे फैक्ट्री रो केते इंप्रूवमेंट हला बट इफ यू आर लुकिंग एट द टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ऑफ अ कंट्री तमे देखियो पड़िबो जे व्हाट इज द इंक्रीज इन योर कैपिटल इंक्रीज इन योर लेबर and increase in our capital and what is the improvement in efficiency of your capital and labor. बुझी पड़छ एटा बुझी पालो नै एटा बुझी पाला डिफिकल्ट लागला कि हमर जो टोटल एफिशिएंसी होची हम देश रे धरो हमें 7% ग्रोथ हला बट जस्ट टू गिव एन एग्जांपल आज 6% देची नेक्स्ट ईयर हमर 7% देची त हमें प्रश्न पचरिबा जे ए जो 7% 1% इंक्रीज कला एटा कोन लोकंकर एफिशिएंसी पे इंप्रूव कला कि बेसी लोक चाकरी पे लेवल इंप्रूवमेंट हला. नाउ हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस? हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस? बुझिलनी आम देश रे धरो 10% अनएम्प्लॉयड अछंती नेक्स्ट ईयर जदि हमें 4% को एम्प्लॉयमेंट देले विल देयर बी इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन और नॉट? सो दैट इज इंप्रूवमेंट इन K in L. केटा केमते हो धर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आसला सेविंग इंक्रीज हला. प्लीज नोट डाउन
तमर सेविंग आज 30% अच्छी नेक्स्ट ईयर 32% है सो देन योर के हैज इंक्रीज आर यू फॉलो मी कैपिटल माने कौन सेविंग टा अरे कैपिटल टा कौन तुम सेविंग टा बढ़ी ना सो तमे गोटे देश रे तमे के टा बढ़ेलो बाय अबाउट से अनदर 10% एल टा बढ़ेलो another 10%. So that is one aspect. The other aspect is what is the improvement in your factor efficiency. तम labor टा केते improvement करछि आ केते. So in USA, please note down, in USA, एटा होछि 60%, एटा होछि 40%. भारत रे एटा होछि 70%, इंडिया रे एटा होछि 70%. और इट होची 30%. If I have to find out जे हमरो 1% ग्रोथ कौन कोथ में हेची 70% ग्रोथ हमर भारत रे हेची because of increase in employment and increase in saving. Clear? बाकी 30% हेची because of improvement in productivity. लोकंकर स्किल बढ़िला, बेसी लोक स्किल्ड हेले. Have you understood the difference? बुझ पालो नै? So Sol said जो देश रे जति के efficiency टा बढ़ी छी से देश टा बेसी ग्रो करियो. Are you getting my point? So have you understood? सेति में तो कहंती सोलो रेसिडुअल. Please note down. एटा आसीबो अनेक समय IAS रे से what is सोलो रेसिडुअल? What is सोलो रेसिडुअल? Improvement in factor productivity. Please note down. Improvement in factor productivity. पाजी क्लास ले रहा था हाँ सॉरी हाँ सॉरी थैंक यू हैव यू अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड दिस इज वेरी इंपोर्टेंट आमे जे दिटा बहुत इंपोर्टेंट कथा पढुचे भारत को प्रगति करिया पे देयर आर टू वेज वन इज वी गिव मोर एम्प्लॉयमेंट टू पीपल वी एंगेज मोर पीपल. Second, we increase our saving or we bring in more foreign direct investment. So that is one way. The other way is how do you improve efficiency of our people? How do we improve our education system? How do we improve our skilling? Are you all getting me? So say ta kochunti solo residual. What a solo residual? Solo residual is nothing but improvement in efficiency. So generally, jete developed country achi, the history of their growth is history of their efficiency. Please note down. Most of the countries, the America hala, Europe hala, Germany hala, tankar growth ta hala mainly because of factor efficiency. In case of China, it is almost 50-50. 50% hochi K&L, 50% hochi factor efficiency. Skill body, education improvement is. Are you all following me? Have you understood the importance of factors of protection or not? Efficiency बहुत बड़ा. सेठी हमें कहूचे सब बड़े यूएस को हमें 1 नोचे. हमें मणिपुर को सब बड़े में कहे 1 करके इंडिया को 0.3 करे. अरे मणिपुर की नहीं. चाइना को करे 0.4 तब जर्मनी को कहते कहे 0.8 कहे ना नहीं. That is nothing but solo residual. Have you understood now what is solo residual? Combined factor efficiency. 85 से 1987 मसीह तक को नोबेल प्राइज मिलता है. ए सोलो रेसिडुअल पे. एक मैंने नुआ मास्टर्स को पाठ पढुचंती इकोनॉमिक्स तंकी किछि जणा नै उडा. मुद्रोटे इंटरव्यू बोर्ड रे पचाली गोटे यंग लेक्चर मुकली व्हाट इज सोलो रेसिडुअल. कहले सर आई हर्ड अबाउट इट. मुकली हार्ड अबाउट इट चटकंड देबी हार्ड अबाउट इट कोन सोलो रेसिडुअल कह केमती. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज सोलो रेसिडुअल? माने आमे जेतबेले पॉलिसी करूची गोटे देश रे प्लीज रिमेंबर आमे जोटे हम ग्रोथ करे पे करूची ना. सो ग्रोथ शुड बी ड्रिवन predominantly by improvement in efficiency. आम जेति की efficiency improve हबो सेति के हम ग्रोथ रा बेटर हबो रोबस्ट हबो. बुझছো तो कथा?
then एथरे को main question आसीबो जे with reference to the Cobb-Douglas production function, what are the challenges before India and how do we surmount it? With reference, what is Ashok, what is Cobb-Douglas production function? Badhiya question. What is Cobb-Douglas production function? With reference to India, please explain the challenges and the way forward. Chitra kon कहबो? Amara main challenge ta कोटा हबो? Amara how to improve our factor efficiency. Factor efficiency. एटा होची কথা। बुझी गलो तुम माने मंजा कथा बुझी गलो तो? बस। Please note down. Now, when we talk of growth, friends, concept should clear. When we talk of growth, we have called the Harrod-Domar model. Please note down, Harrod-Domar model. 8 abhi preliminary question. Harrod-Domar model. এই লোক भी 1935 মସିହାରେ ଇ କେନ୍ସ ର ଛାତ୍ର ଇ ହଉଛି କେନ୍ସ ର ଛାତ୍ର କିନ୍ତୁ କେନ୍ସ ଯେତେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ସେ କହିଥିଲା ଯେ ସବୁଠୁ ମୋର ବ୍ରାଇଟେଷ୍ଟ ପିପଲ ହଉଛନ୍ତି ହାରୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଡମାର ଯେତେ ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ବ୍ରାଇଟ ପର୍ସନ ହଉଛନ୍ତି ହାରୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଡମାର ହାରୋଲ୍ଡ ଡମାର was responsible for working out the G ଟା କେମିତି ହବ how do you work out what is G please note down ଆମେ जो ग्रोथ कहूचे एटा कहा ऊपर हबो how do we calculate growth से कहला जे growth please note down growth is nothing but G is equal to please note down G is equal to S by C please note down वो आगुर कहितली किंतु आउथके बुझे दोस्तों growth is equal to तो क्या S by C S where S is saving and C is please note down incremental capital output ratio incremental capital output ratio एटा को भलो करी बुझे चेष्टा करो समझते ICOR please note down ICOR हला del K by del Y del K del होचे increase incremental capital output ratio हला there supposing you are spending 1000 rupees and your output is 50 so what is your incremental capital output ratio now if your del K is 1000 and your output is 100 what is ICOR जदि तमे टोटल कैपिटल खर्च करछो 1000 टंका 1000 टंका रो तुम्हारे 50 टंका आउटपुट होची व्हाट इज योर ICOR 20 आउट सिचुएशन ना 1000 टंका तुम खर्च करछो केते मिलछ तोर आउटपुट तल केते ICOR हला so the lesser the ICOR please the lesser the ICOR the better is the country जो देश रे जिते कम पैसा लागुची गोटे करिया पे सेही देशटा मोर एफिशिएंट धर गोटे तुम एयरक्राफ्ट तैयारी करछो तुमको 5 कोटी लागुची गोटे एग्जांपल दोची supposing I make an aircraft and I spend 500 crores सेही एयरक्राफ्ट धर अमेरिका रे 250 कोटी टका रहउची कोटा मोर एफिशिएंट सो ICOR जो देश रे ICOR जते बेसी सेही देशटा सेति की इनएफिशिएंट प्लीज नोट बुझी पड़छो कथा एक कॉन्सेप्ट रा मन रखो the higher the ICOR the higher is the level of inefficiency आमर इंडिया रा जी टा केते 7%
So this 7% is arrived by 30 divided by 4. 4.5. So India's ICOR is how much? 4.5. And what is India's saving? 30. Is it clear to? किमती G टा calculate करे बुझी गला? अरे बुझलो कि नहीं? So supposing I want to increase the G, then what do? I have to increase this to 32. 8 of the 4 करी कितने growth होगा? Please note down. Rosalind, have you understood? G is what? G is equal to S by C. तमर देशरे यदि सेविंग हला 30%, तमर ICOR हला, तो ICOR will depend on the efficiency of your labor. अरे जो तो जति कम खर्च होबो सेटा से मोर एफिशिएंट हला नहीं, बुझी पड़छ नहीं. G is equal to what? S by C. S hela saving, so higher the saving, please note, higher the saving and lower the ICOR, more would be the growth. किमते मुंडिया कथा कहिछि एई तीटा लोक हारोल्ड डोमार और कप डगलस मॉडल for me are the most important contribution in economics. बुझी पड़छ तो सिंपल वे धर सपोज जेते महालनविश को नेहरू कहले जे हमर फर्स्ट प्लान रे हमर ग्रोथ हेची ओनली 3%. सेटू से महालनविश को कहले महालनविश को डाकले फोन करी सेटू कहले देखो तमे तो सेकंड प्लान जो करिवो तबे सेकंड प्लान रे आई वांट आवर ग्रोथ टू बी 5%. सुनाती भलो करी फर्स्ट प्लान रे इंडिया रा ग्रोथ हेतला 3%. सेटू कहले आई वांट दैट ग्रोथ इन सेकंड प्लान टू बी 5%. तो सेकंड तुम तो फेमस स्टैटिस्टिशियन की कहला सर वेरी सिंपल आई विल अप्लाई द हारोल्ड डोमार मॉडल. अरे गरी में पॉइंट से कहले वर्तमान भारत रे 15 होची हमर सेविंग आउ 5 होची आईसीओआर. प्लीज नोट डाउन. तो हमर ग्रोथ होची केते 3%. बुझी पड़छ केते ब्रिलियंट माइंड तुम बुझी पड़छ. से कहले जदि आपण 5 चाहउचंती, अच्छा ए 5 टा कमिया भारी डिफिकल्ट. ए 5 टा कमिया बहुत डिफिकल्ट. एफिशिएंसी टा एते जल्दी कमे होबो की? से कहले सर द ओनली वे इज दैट वी हैव टू इंक्रीज आवर सेविंग बाय हाउ मच? केते हेले ताले हबो 25 हबो 10. जदि हमें 15 रे 10 आउ सेविंग करिवा, अरे गेट में पॉइंट, then only we will achieve 5. सिकली 10 आउ किमिति सेविंग आनिमा का सर बाहरो हमें लोन करिवा. प्लीज नोट डाउन. सेइति पई सेकंड प्लान रे भारत मैसिव लोन कला. Have you understood now the trick? ना बुझ पाला नहीं. फर्स्ट प्लान रे हमरो जमा 15% सेविंग होतला, जोटा बर्तन इंडिया रे 30% होची. बुझी पड़छ? टुडे आवर सेविंग इज 30%. किंतु एमिते समय थिला हम भारत रे सेविंग जमा 15% हो. आ सेते बेले हमर आईसीओआर वाज अबाउट 5. So he suggested that the only way that we can increase our growth to 5 is by foreign direct investment, by borrowing money. So by borrowing technology, by importing heavy machinery. Please note down, by importing heavy machinery. बुझी पड़छ? पहले जेते सब स्टील प्लांट हला कोट असला तुमको मुफ्त रे देले, एरा सब लोन रे तमे नेलो. राउरकेला हला जर्मनी रे नेलो, बोकारो हला यूएस रे नेलो. So that is how the country grew. आज जो नेहरू को जो पार्टनर करछंती एरा सब गध किसी आईडिया नै तकर. ताको पचारे ओटी मोदी को जे हारोल्ड डोमार मॉडल टा सर कोन? अरे आर यू ऑल फॉलोइंग मी? केते बुद्धिया लोग से करा हारोल्ड डोमार के तुम हारोल्ड डोमार का नाम सुन नथली. से त केमिस्ट्री लोग तले नेहरू इंग्लिश और केमिस्ट्री लोग से हारोल्ड डोमार कहले सर यू हैव नॉट हर्ड अबाउट हारोल्ड डोमार. Harold Domar sir, Keynes ro student like I have met Keynes, but I have not met Harold Domar. So Harold Domar were called to India. So they met Nehru. So then he said, no, this is fine. This theory is fine. अरे बुझी पड़छ तो जो माने सब बहुत फंडामेंटल काम करिसंती
they have worked because of these fundamental equations. एमती टोपो मारिक हबनी माने केमि तमे माने how you go about it. So please note down, he also said जे गोटे हला G हला growth where you are not bothered. तापर कहला GW हला warranted growth. What is the growth that we want? Renati note करो से कहला जे growth is of three types. गोटे हला G हला normal growth. No government intervention is there. जहाँ होची हो जहाँ जगन्नाथ देवे भाविले कौन हबो जगन्नाथ जहाँ देवे देवे चला इते भाविकिर कौन हबो GW वाला warranted growth. That is what is the growth that you require. आज 6% अच्छे में कितने पहुंचे हमें चाहूँचे 8%. Please note down, in India we are looking at 8%. एबे अच्छी कितने 6% अच्छी. Please note down, GN होची maximum growth. What is the maximum growth that the country can achieve? It अनेक समय prelim रे आसीबो GN आसीबो. GN हला natural growth. GN is called natural growth. Natural growth माने full employment growth. When everyone is employed, full employment is that is the maximum capacity that you can, when all resources are fully utilized, that is called maximum growth. So it is assessed that India's GN can be around 10%. Bharat's potential अच्छी 10% growth हुआ पे, जोटा कि China achieve करता है. Please note down, China achieved it from 1980 till 1995. 15 वर्ष पर्यंत चाइना टा आमुटू इमते छलांग चु मार देला ना 80 पूर्व रा सब हम संगे थिले ए सब सब हम संगे थिले समान थिले 80 रे से माने हम 80 1980 रे तांको ग्रोथ भी 4-5% थिला भारत भलिया से टू 80 रे से माने छलांग मारले 10%. किमती गले by cost balance production function, by improving their efficiency, by spending more on education, skill rate. बुझलो तो? Employment संगे efficiency. दीटा कले. बेसी लोको employer कले, efficiency भी improve करे. किम कले? Through education, by spending more on education. That is what I keep on saying. South Korea भी say कला. जो देश सब improve करते दी. So phenomenal growth of 10% was because of that. Natural, माने this is what I can achieve, or this is my potential. तर तमे इतने भलो स्टूडेंट तमे IAS पाइबो, that is your GN. किंतु GW हला OS, G हला किछि न पढ़ी कि जाऊ कि हो सर फेल हे गेले तो सर जी फेल हे गेले बुझी परछो तो GW बुझी गलो GW GN बुझी गलो. GN हला तमर कैपेसिटी केते फुल कैपेसिटी अछि. आमे जो पिलां को देखि कि आमे सो दर जो इंटरव्यू करतली मु प्राय 200 पिलां कली मत लागला 20 टा पिला कर जीएन अछि एठी आईएस पाइबा पे. हैव यू अंडरस्टूड कोन कहलो हां प्राय से बड़ा स्ट्रगल होची. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट ओनली अ टीचर विल नो के तमे फुल स्ट्रेच रे जाई छ कि नहीं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एज अ गुड टीचर I alone would know जे तमे कोनटा कर परिबो. आमे तले असेस करूछु when we see students मु पुओ तले पाठ पढुतला with a very bright student. My wife told me सेटा IIT पाइबो. मु एटा जमा IIT पाइबोनी किंतु बहुत इंग्लिश बहुत बढ़िया अछि, बहुत बढ़िया अछि. He was very good in English. तो मो वाइफ बहुत बंधु कोटला कारण मु पिला दिनो ताको पाठ पढुथिल तो मु केले एटा पाइबो भलो इंजीनियरिंग कॉलेज रो पास करिवो किंतु IIT पाइबार तारा स्टैंडर्ड नहीं. माने प्लीज रिमेंबर दिस, तमे जेतेबेले निजो को असेस करूछ यू कैन नॉट असेस. इट इज अ गुड टीचर हु विल बी एबल टू असेस जे तमर केते कैपेसिटी अछि कोन तमे करि परिबे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स द जॉब ऑफ अ गुड टीचर. हम पिला को देखि करी धर मु प्राय 10 वर्ष पिला को पढी स्कूल ऑफ लीडरशिप रे मो प्राय 6 टा खंडे पिला पाइचंती आईपीएस इनकम टैक्स आईएस की पानंती आईपीएस तीन जन कोन पाइचंती सेमन कोइले बडा पाइबे बडा पोटेंशियल अछि. किंतु से पोटेंशियल अछि माने नुह जे से जो तकियार सोइगिरी ताको पूरा फुल परिश्रम करे बुझले कि एक त कि खराब भाई रे आमे सोड देखो पिलाटर पोटेंशियल अछि कि
तापर ए पोटेंशियल संगरे से केते परिश्रम करि पड़छि थर्ड हला भलो टीचर अछि कि नै आ फोर्थ हला टिके लिटिल बिट ऑफ लक ए चारिटा जिंस ता दरकार तो बुझो तो बुझी गेलो तो जीएन टा बुझी गेलो तो जीएन हला तमरो फुल कैपेसिटी केते डोंट गेट डिस्पिरिटेड मोर सबले अप्रोच हला जीडब्ल्यू करके तापर जीएन को ओके लो हैंगिंग फ्रूट तर मो पो पाइलेनी आईटी रे पाइलेनी वा किंतु से पाइगला इंजीनियरिंग कॉलेज रे पाइगला किंतु जोटा तार बहुत भल लागुतला धर एमबीए पाइगला अहमदाबाद रे पाइगला तो बढ़िया डिबेटर बढ़िया इंग्लिश कहे बहुत बढ़िया डिबेटर से पाइगला सेतरे तर मु कहले एउडा के से अनुमान को लांडू करिवो किंतु ए जो माने जो मैथमेटिक्स अछि फिजिक्स अछि जो लेवल अछि सेथरे ताको कारण मु पाठ पढुथल ताको खाली निज पुओटा बोली भाबियो जे मो पुओटा ताड़ी पक सेमति हबो you have to see माने because I see you all of you are my like my children so I can evaluate ना तो सेत में काहे कहूची बारंबार तमरो खाता उडा देखै पे चाहूची ते कोनटा लेखुची से तार किसी एक्स्ट्रा कथा लेखुची तुम माने सब जाने चाहूच किंतु जेपन मु कागज रे न देखि छी भलो के 3-4 ता न देखि छी I cannot make an assessment आमे से थ्रू 5-6 तम लिखि देबा हम असेस कर दो एटा पिलटा पाइबो कि नाही पटकरी पाइबो कि नाही हम जान एटा कोन तर स्टैंडर्ड केते अछि तापर केते परिश्रम करूची एवडा कहूचे आ टिके माने आई डू नॉट बिलीव मच इन लक बिलगी दिस इज लक फॉर तमे जो थरो प्रिपरेशन करछो यू टेक इट फ्रॉम मी तो थरो प्रिपरेशन करछो पाइबटा सुनिश्चित माने कोटा केते पाइबो 100 रे अछो कि 200 रे अछो सेटा अलग कथा किंतु पाइबो 100% जिम तुमको पढौची से बडे तो सिस्टमैटिकली पढिबो पढि करी ताको दि करियो पाइबटा सुनिश्चित बुझी गेला जीएन टा ना बुझी गेला नाही ना नाही बुझेला नाही हां इंडिया को जीएन होबे भारी कष्ट किंतु जीडब्ल्यू होबे कोन दरकार वी हैव टू increase नाइ बागे increase our saving and we have to improve our ICO factor product कोन होबो तम पडियो if we want to increase our G then we have to increase our saving please note down in 2006-2007 note karo please in 2006-2007 sir in 2006-2007 India had the maximum growth of 9% सही समय रे भारत रा सेविंग थला 36 और ICO थला 4 प्लीज नोट डाउन in 2006-2007 गोटा टेबल कर दोची ताल जाडी होता है कराटा को भल करी को दो सही से मोर सबु हला टेबल बुझले कि मोर सबु हला टेबल मु जहां भी करे टेबल ही करे लिखो करे भी कितने 30 कितना ना कहले रे पेट भूलुची होनी उठी पेन ते मारी हेलो इठी एबे देखाउ ना नहीं मो सुनी व्हाट कर दे ताले ते कहला गोटे नले 4 और 9 बुझी पड़छो 2023 24 30 और 4.5 केते होछ ताले एटा होछ प्राय 6 खंड होछ 30 डिवाइडेड 4.5 केते होछ 30 डिवाइडेड 4.5 केते हो 6.6 I mean we are trying to reach
we are trying to reach by 25-26 around 32, and this we want to make it 4. Please note down. This is what we are looking at. Rosalind, our saving ta बढ़ेवा to 32, our efficiency बढ़ेवा to 4. Efficiency बढ़ेवा माने ICR टा कमेगा. बुझी पड़ सकता है? बुझी हो नहीं ये? नहीं कसला हो जाए? दिसुन ना कौन वो? देखो देखो देखो. कितने सुंदर भावरे जिनसुड़ा बुझी हो चला नहीं? तो हमें तो बजट देखिबा. When we are looking at budget कहो जे हमारा growth बढ़िया हो. ताला हमें देखिबा जी what are the incentives for saving? Slow down. से supposing budget रे कहूची जे हमारा growth रे better हबो. ताला हमें कौन देखिबा ताले? What are the incentives being given in the budget for savings? बुझी पड़छन नहीं? अरे saving ता बढ़िया पे तमें आइदर से फिक्स डिपॉजिट रेट बढ़ाओ कि तमें जो पीपीएफ रे जमा बर्तन जमा अच्छी लक्ष टका अच्छी ताको 1.5 लाख टका करो. Are you all getting me? So what are the incentives being given by the government for saving? जदि सेविंग रे इंसेंटिव नहीं तला में कहबा मैडम काहे के अपन कोलेनी तले किमते हम भारत सेविंग ता किमते बढ़िबो. Are you getting me point? Middle income people काहे अधिक सेविंग करिवे. तमें जदि फिक्स डिपॉजिट रे से 6% पाइबो तो को 6% ता 7% हबो. पीपीएफ रे आजिकली 7.5 मिलुची तम मिलियो 8% मिलियो कि 9%. तो हमें विल पिट मोर मनी इनटू पीपीएफ. बुझी पड़छो तो? अब आईसीआर बढ़िया कमे पे कोन करे पड़िबो? स्किलिंग रे इंप्रूवमेंट करे पड़िबो. बेसी आईआईटी स्कूल कॉलेज रे इन्वेस्टमेंट करे पड़िबो. बुझी पड़छो तो? क्लियर हला का? नहीं कौन रोजनी कौन है ना तुम डिफिकल्ट ना माने कमेली देखो आईसीयू टा कमेली आईसीयू टा कौन डेल के बाय डेल वाई ता माने आई स्पेंड मोर लेस मनी फॉर द सेम आउटपुट. हाउ does that happen? By improving the efficiency of a person. If the efficiency of a person is more, then the cost would be less. So the efficient of our cost होगा कि नहीं बोलो तो clear. So now please note down. हमें concept है हमें वर्तमान देखिवा impact of economic liberalization. हमें वर्तमान कोटे नया मॉडल को जीवा that is impact of economic liberalization. Impact of economic liberalization. Impact of economic liberalization. Eighth mu kohuchi je 1991, all of you please keep a note, 1991 was a watershed year. Kora kala? हाँ धर आम देश रे वर्तमान सपोजिंग I put money into provident fund PPF. I have a PPF account. Now in the PPF account I am getting 7% as interest. So every year I put about 1 lakh. But supposing the PPF rate is increased to 8%. So I'll put 1,50,000 rupees. So more money, more कम खर्च करके saving बेसी करेंगे. These are the ways. मैंने how are we incentivizing savings? जो मैंने fixed income group अच्छी, pensioners अच्छी, दर बटे investment allowance would लखो, investment allowance होची, दर तमे गोटे नुआ factory करूचो, ताले दे नुआ factory करिवो, नुआ जगह तुमको instead of 30% tax you give 10% tax. That will encourage more investment. Are you all getting me? So हमें तो budget तो दिखिबा, we will try to see what all incentives government is giving for improving saving.
saving improve. बुझिगला clear? Now we come to so 1991 friends was a very important year. Mu already kahi sarchi the USSR got disintegrated and the Berlin Wall also fell down. Berlin Wall jota haitla seta that fell down, and liberal democracy and free market, please note down, liberal democracy or free market, ei dita jinisha became the buzzword. एटा बजवर्ड किए हला तार मालिक होची ता ना होची ए फुकियामा ए जो हसुची नाता देखे गिरी से गोटे बही लिखला एंड ऑफ हिस्ट्री बाय फुकियामा ए जो जापानीज प्रोफेसर ता होची फ्रांसिस फुकियामा एंड ऑफ हिस्ट्री मोर ए गोटे बड़ा गुरुदेव मोर से गोटे माने तार बहीटा होची इट वाज वन ऑफ द हॉटेस्ट सेलिंग बुक इन द वर्ल्ड बहुत बही किना 10 million copies have been sold of this book, end of history. माने से essentially कहूची जेते बेले USSR भांगी गला, बर्लिन मन भांगी गला, तार कहबा कथा आउ से कम्युनिज्म कैपिटलिज्म नाही. एबे असला कि लिबरल डेमोक्रेसी as a political system, please note down, liberal democracy as a political system pragya and free market as an economic system. Please note down. Please note down, this is very important. आगुर कौन होतला कैपिटलिज्म में फ्री मार्केट आउ लिबरल डेमोक्रेसी नथिला सेतरे होचे डेमोक्रेसी फॉर द रिच मैन बुझलो के चेष्टा आउ सोशलिज्म में कौन थिला फ्री मार्केट नथिला किंतु पूरा पूरा सब माने सब सर्व समान सो एई थरे फुकियामा कहला जे तमे इफ यू वांट टू रियली हैव अ वेरी गुड सिस्टम then you should have liberal democracy or you should have free market. Liberal democracy meaning hala मन रखो जे multi party system. Please note down. Liberal democracy main कथा hala multi party system. In communism it is only one party. बुझिला? In communism there is only one party, that is Communist Party. Liberal democracy रे multi party, Congress achi, BJP achi, BJD achi, it's a multi party. That's liberal democracy. Liberal democracy re there is a space for dissent, space for protest. Opposition का काम होला जोटी भूल होची कहिबे एटा होची spirit of liberal democracy. Liberal democracy re dissent is a safety valve of democracy. Dissent is a safety valve of democracy. बहुत great scientists देखते ले responsible dissent is the essence of democracy. Is the essence of democracy. जरे लास्की बोले जन लोक थिले हारोल्ड जे लास्की अनेक समय क्वेश्चन इटर्नल से कहथिले जे रेस्पोंसिबल डिसेंट इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी. खाली डिसेंट नो प्रतिवाद नो रेस्पोंसिबल डिसेंट तमे जो कथाटा कहूचो इट शुड बी लॉजिकल तमे एथ पे कहूचो जे नाइटा ठीक कथा कहनांती. Responsible dissent is the essence of democracy. एम सब लिखियो मेन पेपर लिखियो ठीक है लिखले जाकरी मार्क बढ़ियो. हां सिटी त लिबरल डेमोक्रेसी नाही सिटी लिबरल डेमोक्रेसी नाही रशिया रे भी नाही पुतिन रे भी नाही पुतिन दादागिरी करछि एकुटिया एक छत्रपति करछि किंतु फ्रांस रे लिबरल डेमोक्रेसी अछि जर्मनी रे लिबरल डेमोक्रेसी अछि फ्रांस रे प्राइम मिनिस्टर बाहरी गला नो प्राइम मिनिस्टर आसीबो बुझी पड़छो त लिबरल डेमोक्रेसी कथा बुझी पड़छो त लिबरल डेमोक्रेसी रे वाद प्रतिवाद अछि किंतु वाद प्रतिवाद रो अर्थ न हो जे तो खाली प्रतिवाद करके जाके बदमाशी करिवो राहुल गांधी भलिया सब कतरा हावा ना यू हैव टू बी रेस्पोंसिबल आल्सो तमे अल्टरनेटिव देखियो पड़ियो माने सब कथा से ठीक कहूची किंतु सब कथा रे खाली संविधान ता देखियो लोक हसिबे तक
Are you all getting me? So he is ଏବେ ଚାଲିଛି ଗଠବନ୍ଧନ ସରକାର। हाँ ताहले सुन एटा होची अनार्की होची तेणु सेइथरे कथा होची कोन सेइथरे नेचुरली जो गवर्नमेंट रहिबो से इट हैज टू डील फार्मली विथ देम सो लिबरल डेमोक्रेसी रे स्पेस रहिबो डिफरेंस रे स्पेस रहिबो एंड यू रेस्पेक्ट एन अपोजिट व्यू पॉइंट बट एज आई सेड दैट अपोजिशन शुड बी रेस्पॉन्सिबल दैट व्यू पॉइंट मस्ट बी responsible that is why I am saying responsible dissent is the essence of democracy ki kohitila Harold J Lasky one of the great political philosophers se kohitila buji parchu to ta par hela Washington consensus bane achi se kon कहला so 1991 मसिया परे every country realized that the way forward should be free market and liberal democracy. Is that clear? तापरे 1989 रे गोटे वाशिंगटन कंसेंसस हेतला मने अछि समतहर वाशिंगटन कंसेंसस ता मने नियत लेखो अच्छा एटा हला यूरोप करथले रो देखैथिल तुमको 1990 परे कोन हला देखो ए जो रशिया देखुछो तो ए रशिया रे यूक्रेन बेलारूस लिथुनिया लाटविया एस्टोनिया एडा सब रशिया रे थिले बुझछरा ए जो देखो 1990 पूर्वरु एडा पूरा सब रशिया रे पार्ट थिला पूरा सब रशिया रे पार्ट थिला हला एडा पूरा तर रशिया रे पार्ट थिला देखछो तो एडा सब बर्तन सेथि में से यूक्रेन को अटैक करछि ना ऐसे जो अटैक करूची कोन पे करूची एटा तार आग्रु थिला ना से पार्ट ऑफ यूएसएसआर बुझु तो एम तो हां वाशिंगटन कंसेंसस कोन थिला एटा नियर टिप एटा बहुत तोरा मेन रे एक क्वेश्चन आसीबो वाशिंगटन कंसेंसस ता कोन वाशिंगटन कंसेंसस इज नथिंग बट फ्री मार्केट फिलॉसफी एटा नोट करो समझते एटा मेन एग्जामिनेशन रे आसीबो वाशिंगटन कंसेंसस हला फ्री मार्केट फिलॉसफी ना फ्री मार्केट फिलॉसफी ता कोन तो क्वेश्चन आसीबो वाशिंगटन कंसेंसस डज नॉट कंटेन द फॉलोइंग छटा आसीबो सेथरे गोटे थिबो जोटा रथुए वाशिंगटन सेथरे तुम करे दउची अरे बुझो कि नहीं तुम हां सर वाशिंगटन कंसेंसस मन अछि सर बारंबार एटा कहीं कहउचंती क्वेश्चन ता आसीबो वाशिंगटन कंसेंसस डज नॉट कंटेन द फॉलोइंग सेठी पढिलो तमे फसलो बुझु तो गोटे मार्क पाए पे किमिति कष्ट होछि एनिछ तो सेही पे बडा सब मन रखियो कितंजलि बुझु तो कि एते आराम रे हबनी एटा ए क्वेश्चन धरो पचारली झुटियो कि नहीं मते कहूनो अरे या भीतर गोटे बेंगा करी गोटे पके देबी द वाशिंगटन कंसेंसस डज नॉट कंटेन द फॉलोइंग तो फसी जोरा नहीं मते को तो कौन हैला मते को फास्ट में को all of you please understand this lekho note karo gote first हैला low fiscal deficit please note down low fiscal deficit should be less than 3% low fiscal deficit तापरे moderate tax rates गोटे पर नोट करो एटा पूरा मन रखो if you want to get into the IAS or OS in the top position ए भला क्वेश्चन रे गोटे मार्क तुमको आने पड़ी गोटे मार्क रे IAS रे 6 पिला आछुंते जो फर्स्ट जो आसीबे 100 पिला रे माने प्राय 3टा 4टा पिलांकर मार्क एकदम समान गोटे मार्क तमे 5टा पोजीशन ऊपर चल जिवो बुझছো तो कथा फास्ट कोन हला फिस्कल डेफिसिट लो मॉडरेट टैक्स तापर इंटरेस्ट रेट शुड बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट बैंक रेट हो कि डिपॉजिट रेट हो कि बैंक में जो कि लोन रेट हो
तुम आज बैंक को जाऊच फिक्स डिपोजिट आगु कौन था समस्त समान थिला आज स्टेट बैंक अलग दउची इंडियन बैंक अलग दउची पीएनबी अलग दउची बुझी पड़छ को कमिटी पर एमती हेची मते कहलो जति कहि दो तुमको 100 टका देबी के तुमको 10 थर वसूल करेगी कौन ना कहलो उर्जित सिंह पटेल के उर्जित सिंह अरे उर्जित पटेल जगजीत सिंह जो गीता गाउची गजल गाउची ना कौन अरे मोर प्रश्न टिके सुनो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मोर प्रश्न हला व्हिच कमिटी आफ्टर व्हिच कमिटी interest rate and deposit rates in India are market driven. Have you understood the question? Co committee pare interest rate both deposit ra or loan ra is market driven and not decided by the RBI. Aguru RBI decide kurtala. अरे बुझु कि नहीं जेते सबु हमरो नेशनलाइज्ड बैंक थिला तारो कोन डिपॉजिट रेट हबो और कोन लेंडिंग रेट हबो बुझि पड़छो एटा डिसाइड करथला कि आरबीआई रे को कमिटी को ना कहिछा गुर तुमको के रंगनाजर कमिटी प्लीज नोट डाउन इट इज नारसिंघम कमिटी इट इज द नारसिंघम कमिटी he was the RBI governor please note down liberalization in the banking sector is because of the Narasimham committee. बुझलो तो नरसिंघम कमिटी कहला जे एडा काहे कि तमे एमती करूचो तमे सो आमे तले मनी बैंकिंग को जीवा ताको पूरा पढिबा किंतु एती खाली मन रखो जो बैंक रो जो हमर जो रिफॉर्म्स है इकोनॉमिक रिफॉर्म है सबटू मोस्ट इंपोर्टेंट रिफॉर्म हला the deposit rate and interest rates are not determined by RBI but market driven. सर किसी बुझिले कौन से कोतला रंगराजन कमिटी कोतला रंगराजन मरी जो तार देव बल नहीं विशेष सिख ता बदला कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज रेट प्लीज नोट डाउन कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज रेट हमरो डॉलर रुपी जो डिटरमिनेशन हबो सेटा हबो कॉम्पिटिटिव माने सेटा हबो फ्री एक्सचेंज रेट एटा प्लीज नोट करो हमर होची एक्सचेंज रेट गोटे हला फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट all of you please note down this is a very important area I am going into Renati note करता को भलो करी आमे तळे एक्सचेंज रेट ता कहूचे मार्केट ड्रिवन हबो बोली ता माने कोन आज 26 टका हेछि काली 90 हे परियो पर दिन 82 हे परियो have you understood so those countries where the bank does not intervene is called a flexible exchange rate policy fully flexible exchange rate policy but in India we do not follow that process so the state bank the reserve bank intervenes when the rate goes up beyond a particular limit please note down India रे कोन हुए जेते बेले रेट ता बहुत बढ़ी जीवो सेते बेले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोन करिवो डॉलर छाड़ियो मार्केट को धर आज 86 रु धर 87 हला 88 हला तो 92 हे गला काहे कि तर डिमांड फॉर डॉलर इज मोर देन डिमांड फॉर रुपी अरे डॉलर दाम ता काहे बढ़ुची अरे तर डिमांड बढ़ुछ तो और सप्लाई नहीं एते ताले रिजर्व बैंक विल रिलीज डॉलर्स टू द मार्केट एटा कहउछंती लिमिटेड फ्लेक्सिबल रेट हला किंतु वाशिंगटन कंसेंसस कहितला जे शुड बी फुली फ्लेक्सिबल आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्वेश्चन आछो जेमति रेना कहउछ क्वेश्चन आसीबो जे व्हाट इज लिखो व्हाट इज वाशिंगटन कंसेंसस
please bring out, आज उसी लिखा है, please bring out to what extent India follows this policy. I'll repeat. What is Washington Consensus? To what extent India follows this policy? Eight at tomorrow, what a main parikya pai. It's a very, very important question. Hello. ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ତାହେଲେ ତମେ କିନ୍ତୁ ଲେଖିବ ତାକୁ ମୁଁ କହିଦେବିନି କହିଲେ ତମେ ତ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇବନି ସୋ लो फिस्कल डेफिसिट इंडिया ହେଇଛି କି ହେଇନି प्लीज नोट डाउन वाशिंगटन कंसेंसस 3% आउची सो अगेंस्ट ईच ऑफ द रिकमेंडेशन प्लीज मेक ए टेबल गोटे मत खाली टेबल दरकार तुम्हारा कोन पॉलिसी आ कोन इंडिया रे ହେଇଛି I only want that table. बुझी पड़छ एटा 3% लेस हवा कथा केते इंडिया रे अछि वर्तमान 5.9%. बुझी पड़छ गोटे अरे बुझी पड़छ कि नहीं बुझी पड़नो उधर अरे हमर वाशिंगटन कंसेंसस कहूची फिस्कल डेफिसिट ता 3 रु कम हवा कथा भारत रे केते अछि अबाउट 5.9% तले करिछि की but we are trying to go near 3%. Are you getting my point? तमे जो आंसर टा लिखिबो सेथरो गोटे टेबल बनेमो तापर रिमार्क दबो जे कोन कोन इंडिया करूची अरे बुझु कि रे कथाटा हां कोटा फ्लेक्सिबल हां so anyway moderate tax rates almost yes our tax rates are moderate so khali interest rates are market driven please note down this is what we are doing interest rates are market driven competitive exchange rate it is limited केतले इंटरवेन करिवा जितले एक्सचेंज रेट ता बहुत हे जिवो when the exchange rate is very high सेतले हमें इंटरवेन करिवा ट्रेड लिबरलाइजेशन माने आमे फ्री ट्रेड आमे टैरिफ बसेबानी आमे टैरिफ बसुचे कि नहीं we are increasing tariffs so we are not so free trade hala trade liberalization so you have to bring out को केस रे हमें ट्रेड रे फ्री ट्रेड होनी तापरे लिबरल एफडीआई पॉलिसी जी को हमरा बहुत लिबरल एफडीआई पॉलिसी अछि मत जी कहि दबो को एरिया रे हमरा लिबरल एफडीआई पॉलिसी नाही कहलो व्हिच आर द एरियाज के भाबी को एते को केसरा का हमर लिबरल एफडीआई नाही को एटॉमिक एनर्जी कोटा सर एटॉमिक एनर्जी कोटा कहलो एटॉमिक एनर्जी कोटा सर डिफेंस एटॉमिक एनर्जी डिफेंस सिक्योरिटी डिफेंस रे केते एफडीआई आछि what is the FDI limit for defense very good answer को एबे केता अछि sir I cannot please note down 49% very good answer give him a big hand to him किंतु डिफेंस प्रोडक्शन रे से चाहउचंती it should be more than 50% ताले कोन हो जो बड़ा बड़ा कंपनी डिफेंस कंपनी अछंती से माने then they will invest in your country if the FDI limit is more in the defense technology then more and more foreign companies will come here because then they will control those industries बुझि पड़छ 49% हेले भारत दादा हबो कि तांकर यदि 51% रहयो अधिकार रहयो से माने दादा हेबे they will decide कोटी किस माने एक्सपोर्ट करिवे very good answer second please देखो newsprint and media there is no FDI माने हमर जो अछि
So we are not permitting any FDI in this sector. Nale eti sabu paper asikri New York Times sabu asikri eti so karante. So but still then we will say our policy is very liberal. Tabar lekha privatization of PSUs. Please note down. Privatization of PSU. Either again it is limited. Our banks should are nationalized. Are buchu ki nahi? Coal India is nationalized. Please note down. Coal India is nationalized. Coal India is nationalized. Hala. Buji porcho. Deregulation. Deregulation mane you do not have a regulator. Jinda je amar insurance regulator achi. Amar SEBI achi. Who are the regulators? Koda SEBI achi. Stock exchange pai. Tabar insurance mein oda regulator achi. Pension pai regulator achi. But if you are a Washington consensus supporter, you say it should be deregulated. And the last uchi, legal security for property rights of rights, including foreign investors. It is there in India. Last are achi India. Just to quickly go through fiscal policy, low fiscal deficit. Our deficit is still very high compared to Washington consensus. Tax reform rate, yes, our taxes are moderate. Interest rates are, we are confirming. Competitive exchange rate to a certain extent. Trade liberalization, no. Liberal FDI policy, yes, except a few sectors. Tapara privatization, no. There are still coal, insurance, please note on insurance, banking, coal, insurance, banking. ये मन रखो तुमको आंसर करिए तुमको बहुत हेल्पफुल होगा बुझे तो तापरे deregulation, no, we have many regulators and I personally believe that there should be a regulator. ए जिनसटा जोसेफ स्टिग्लिस कहउची जो माने सब बिलीव करंती क्लासिकल लिबरलिज्म रे, they believe that the private sector should be regulated. किंतु हर्षद मेहता जो स्कैंडल हितला, that is because the stock exchange was not being properly regulated. बुझी पड़छो? अरे बुझी तो कि नहीं? तापरे legal security of so quickly speaking, how the ना हमें प्रथमे socialism और centralized planning कले हमारा system रे तापरे nationalization कला कि इंदिरा गांधी कला banks और coal mines. In 91 we had precarious foreign exchange reserve. Fukuyama 91 कला the market economy was brought in by Dr. Manmohan Singh. Dr. Manmohan Singh quoted Victor Hugo. Please note down July 91 budget re जेतरा कले एटा को नोट करो रोजलिन एटा को लिखिले तो आंसर है बढ़िया. No force on earth can stop a moment whose time has come. एटा कहितला Victor Hugo. Victor Hugo was a French novelist. He wrote a book called Les Miserables. He wrote a book called Les Miserables. Les Miserables, not The Miserable. Okay. This is a very famous book by Victor Hugo. कौन कहला? हाँ जी बुझी कहबी. मोदले प्रथमे पेरिस जाइथिली. पेरिस रो गोटे माने सेंट्रल जगह रे यार गोटे स्टैच्यू थिला. सो से कहिथिल तुमको सेटा सब फ्रेंच रे लिखा हितला. सेटा गोटे लोक को पचरेटा किए से आश्चर्य होला कर यू डू नॉट नो विक्टर ह्यूगो. सो माने बुझो त सो ए जो नो फोर्स से कौन को से लिखला फ्रेंच रिवॉल्यूशन कॉन्टेक्स्ट. प्लीज नोट डाउन जेते बेले फ्रेंच रिवॉल्यूशन हला काहे हला फ्रेंच रिवॉल्यूशन कारण लुई 14 जो थिला से लोगों को बहुत एक्सप्लॉइट करथला. So because he was exploiting people, so therefore people raised in rebellion, and that is how Napoleon came to power. So no force on earth can stop a moment whose time has come. So Victor Hugo,
जदि जो सुमेंदुर समय आसीबो सेठो आसला लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी प्लीज नोट डाउन लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी लिबर्टी इक्वालिटी एंड अब 5 मिनट सर जोरे हां तो जा लिबर्टी को गर्लफ्रेंड बोले बाहर अच्छे होते की से तो ऐसा व्यस्त सब फोन दी चात्रा आसी उनता नहीं से तो ऐसे रही पर नहीं की तो गाड़ी खाओ तो उसे फोन रे नहीं हां तो गेला अच्छा so what Victor Hugo said कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आसला माने दैट इज इनएविटेबल माने एई बळे गोटे समय आसीबो सेतरे से जो 91 बजेट रे कहितले माने मनमोहन सिंह कहितले जे वर्तमान समय आसला भारत शुड बी लिबरल नाउ आ से सोशलिज्म रो बंधन आव पड़िबानी कारण सोशलिज्म हमरो प्रोग्रेस का बहुत लो होची economic liberalization re when economic liberalization was introduced in India, Dr. Manmohan Singh quoted Victor Hugo, who said no force on earth can. So therefore in 1991 a moment came in India where the country had to become a market driven country. Is that clear? Say I'm quickly just will go through this. कौन इकोनॉमिक रिफॉर्म है एति खान लिखि दियो बुझलो तो एटा नले काली करिवा हला एति थाउ बाजी तो बुझी गलो तो मैं फोन तो कंट्रोल्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म काली करिवा आ तो बहुत माने कब डगला सही बहुत आजी माने बहुत तमरो आजी मुंडरे बहुत हां कोडा कहली व्हाट इज वाशिंगटन कंसेंसस हां तबरे मु सेरे कहले किम करी को टेबल करिवो वाशिंगटन कंसेंसस रो कोन सब रहिछि पैरामीटर्स रहिछि गोटे करो जे द फॉलोइंग टेबल ब्रिंग्स आउट द गोल्स ऑफ वाशिंगटन कंसेंसस एंड पोजीशन ऑफ इंडिया एज ऑफ नाउ तापर कहबो इट वुड बी सीन फ्रॉम द अबव दैट दिस इज वेयर इंडिया हैज डन वेल इंडिया हैज नॉट वेल and these are our suggestions. That's all. Is that clear? तमे घर को तमे घरे लेखि कि आनिवा मते काली दबो से कागज तो हैला काली समझते करो तमे बुझियो देखियो सुनो तमे जदी अनएथिकल हेलो तमे जदी बाहाय कि आ गोटे पिला संगे जदी बुलिलो ताले से तमर भूल नहीं मु ना कथा बुझु कि नहीं तेनो माने मोर मु आई बिलीव ऑल ऑफ यू सुनो व्हाट लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली आई एम नॉट हियर टू एक्ट एज अ चौकीदार ऑन एनी ऑफ यू कोन तमे कलो कोन न कलो व्हाट आई एक्सपेक्ट इज तमे टी पढी करी तमे निजे इंडिपेंडेंटली आंसर करो आर यू गेटिंग मी पॉइंट मु तो एठी करि दी परिबी आई डोंट बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ डिसबिलीविंग यू ओके बट वंस आई नो तुम मते बदमाशी करतो मो संगे रे तो हम जानि कि एटा बदमास्टर है एटा को विश्वास करनी आर यू ऑल गेटिंग मी व्हाट आई एक्सपेक्ट इज तुम टी पढी सारी करी तापर तुम जति कि तुम मन होछि कर ताहले तुम इंप्रूवमेंट हो तुम सेटा उत्तर दे किछ लाभ नै से कहरा जे बदमाश कहरा जे मु उत्तर देबी उत्तर देले किछ लाभ नै मु जानि संगे मते 2 मिनिट लागिवो हां मते 2 मिनिट लागिवो तबे उतारिचो कि न उतारिचो बेसम लगी कोन कहलो अच्छी लिमिटेड accountability would be less because you are giving economic freedom to business people na business people भलो क्वेश्चन को चलो हमें दो ना फ्रीडम दो गवर्नमेंट से फ्रीडम